put Prime Minister's life in danger. Were intelligence inputs ignored? Did Punjab police fail to act? Or was it ordered not to? Cops on duty reveal all. Operation Breach. India Today special investigation. India Today's explosive special investigation into the breach in the Prime Minister's security has sent shockwaves across the political spectrum after it was revealed that Punjab police gave minute details of the protesters blocking the Prime Minister's route to their superiors, and yet no action was taken. Top ministers of the Modi government have cornered the Congress-led Punjab government demanding answers. Minister Smriti Irani lauded the special investigation done by India Today and said that Congress deliberately kept the Prime Minister in a vulnerable position and slammed the Punjab government for Modi's security breach. Prime Union Minister Hardeep Singh Puri, also speaking to India Today, said this was a deliberate attempt to sabotage the Prime Minister's life. Union Minister Prahlad Joshi took to Twitter saying that the nefarious plot to sabotage the Prime Minister's life now stands exposed. Punjab Minister Rajkumar Varkar, speaking on the sting operation, said the entire incident is being inflated to hide the fact that the Prime Minister's rally was actually a flop. Why did the DGP police in Punjab give an all clear in terms of the safety of the route that was to be undertaken by the Honourable Prime Minister? This question was met with an expose by a national news channel. Punjab police officials in this news report have highlighted how they continuously engaged with the Congress government and administration in Punjab to bring to light the threat to the security of the Honourable Prime Minister and his route. Why were security measures which are protocoled for the Honourable Prime Minister deliberately breached due to the active connivance of the Congress-led government in Punjab, who sought to benefit in the Congress party from the breach of the Prime Minister's security? साजिश के सूत्रधारों के सूपड़े बेनकाब हो रहे हैं और आज तक और इंडिया टुडे का जो स्टिंग हुआ है उससे बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पर सरकार में है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इस पूरे के पूरे सुरक्षा के मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करती रही, लोगों को गिनाती रही कि साहब यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप देश को गिना रहे थे कि आप वहाँ कुर्सियाँ कम थीं। अरे तुम कुर्सियाँ गिना रहे थे, देश तुम्हारी करतूतें गिन रहा था, क्रिमिनल करतूतें। और आज तक और इंडिया टुडे ने जो स्टिंग किया है उसके बाद तो इनको मुँह छिपाने की जगह नहीं है इनके लिए। मैं आज तक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य को उद्घाटित किया है और देश के सामने एक सच को लाने का साहस दिखाया है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए ऐसा धृष्टतापूर्ण बयान देना, मुझे लगता है कि अब पंजाब की जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है और इसके लिए मैं इंडिया टुडे और आज तक ग्रुप दोनों को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आपकी राह क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
आपकी आईबी क्या कर रही थी कि ये सियासी नाटकबाजी है, आपको कोई खतरा नहीं था, आपकी रैली फेल हुई, पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद करो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चन्नी साहब की समय में पंजाब ने देखी है, इससे खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शायद ही कभी पंजाब में हुई हो। प्रधानमंत्री की प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी कि उनके आसपास की सिक्योरिटी एसपीजी की होती है जिम्मेदारी, और उसके बियॉन्ड की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो पूरे सिक्योरिटी एपरेटस को कहीं ना कहीं हमें देख के समझ के एक निष्पक्ष जांच होगी, उसी में सामने आएगा कि क्या सिक्योरिटी लैप्स था और क्यों हुआ। Today's special investigation team digs out the truth over the Prime Minister's security breach. Were intelligence inputs ignored? Did the Punjab police fail to act? Our reporters Mohammad Hizbullah and Nitin Jain tracked down the cops who were on duty in Firozpur. This is what they have revealed. The Prime Minister's security breach on January 5th has sparked a huge political storm. With multiple versions of what happened, it is now the subject of a top-level Supreme Court-monitored inquiry. India Today visits Ground Zero to speak with the principal characters of that day. Beyond the political war, as India hopes for answers. India Today's special investigation team is about to uncover a series of twists. Possible answers to questions from the ground that add unsettling color to a disturbing breach. Take a deep breath, sit back, and let's take you straight to the site of the incident. Our first stop. India Today's undercover reporters first meet Firozpur Deputy Superintendent of Police Sukhdev Singh, a crucial law enforcement official in this sensitive area. Since it is close to the border, is prone to smuggling and cross-border terrorist activity. The question was simple. How did the state intelligence units fail to foresee what happened before the Prime Minister's scheduled rally? Listen to him declare clearly that the police was fully in the picture about the protest blockade. They can also jam Harike head workers PS Maku, Firozpur Moga Road, Firozpur Jira Road, Firozpur Fazilka Road to deny the workers of BJP to reach venue of rally at Firozpur. रोकने वास्ते लोन के ये आपने एडवांस में उनको बताया एडवांस 2 तारीख को फिर उसको बाद भी बताते रहे आर डीसी एसएसपी ਨੂੰ एआईजी ਸਾਡੇ 1 ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ एआईजी 2 3 ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ एआईजी ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹਾਂ 1400 1500 ਵਰਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਇਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them ਟੂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਧਰਨਾ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ They can also jam Harike head workers PS Maku, Firozpur Moga Road, Firozpur Jira Road, Firozpur Fazilka Road to deny the workers of BJP reach venue of the. ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने नहीं तुम दास्ता ना ये सारे वास्ते ही है इधर आ विच लिखा है इधर BKU क्रांतिकारी फूड ग्रुप. What you have just heard is a senior police official from the very area of the Prime Minister's security breach, disclosing in no uncertain terms that intelligence inputs had painted a clear picture about the planned dharna. But wait, this is only the beginning. ये वीडियो बलदेव सिंह जीरा
General Secretary Punjab BKU Krantikari Food Group went viral on social media. In this video, Baldev Singh Jeera said that in connection with the visit of Prime Minister Narendra Modi to Firozpur on dated 5, the police is planning to raid the house of the union leader so that the anti-Modi Modi program could be averted by the arresting the What appears confirmed at this stage is that advance intelligence was shared with all authorities who had been mandated with the Prime Minister's route security in Firozpur a full 3 days earlier. But the obvious next question we ask is, how did the protesters get to emerge onto the route if the police already knew about their plans? ये लोग एकदम से सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ठीक है भी हम इतों तक पहुँचे, जदों इतने पहुँच के धरना ला दिता वो भी SSP ਨੂੰ दस दिता। इंटैलीजेंस ने एडवांस दसना होंगे तो फिर 2 तरीक ਨੂੰ 3 तरीक ਨੂੰ 4 तरीक ਨੂੰ DC SSP इतने एक सिक्योरिटी ADGP साहब आए हुए थे नगेश्वर राव, उन्होंने मैं आप मिल के लैटर दिते भी आ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ। On the day of the rally too, the State Intelligence Department had activated its informers and was keeping a hawk's eye on the situation. Intelligence inputs flowed thick and fast about intended disruptions to the Prime Minister's route and rally. The SPG plan shared ahead with the state authorities had clearly mentioned that if the Prime Minister needed to ditch his helicopter for a road trip owing to bad weather, then the entire route needed to be sealed and sanitized. But that clearly did not happen. The burning question, with all these alarm bells ringing in real time, how were the Kisan Union crowds being permitted to assemble even as the Prime Minister departed Bhatinda to make his way to Firozpur by road? Every single detail was being relayed in real time to the police and state government over phone and WhatsApp. DSP Sukhdev doesn't just tell us, he actually shows us the messages on his phone. 11:45 ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 12:07 ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ SSP ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ। 12:07 ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, 12:07 ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਵਿਲਸ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਰੂਟ ਸੇ PM ਆ ਰਹਾ, ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ PM ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 12:32 ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੀਨ ਵੀ 12:32 ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। What you're listening to is sharp testimony about real-time intelligence. Information that should have led to the blockade being preempted and the road being cleared for India's Prime Minister. The conversation goes deeper. 12:50 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਸਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ SSP ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ VVI ਰੂਟ हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फार्मर। अजय उदो PM आया नहीं सी इत्थे। अच्छा अभी आना था उसको, अभी आना था। In other words, from 3 days before the Prime Minister's arrival,
well before the decision to take the road route, right up till 7 minutes before his convoy pulled into Firozpur. Punjab police authorities had been fully in the picture about all contingencies. But it is the final hours before the breach that are crucial. हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 12:45 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 225 ਵਰਕਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਟ ਉਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ये आपने एसएसपी को बताया? एसएसपी को बताया ना ड्यूटी का अफसर कल्ला एसएसपी नहीं मतलब इमीडिएट ला काम तो फिर एसएसपी को दसना होता है ना. Perplexingly, the refusal to act was despite the intelligence alert specifically mentioning that Khalistani fringe elements like Sikhs for Justice were also goading crowds to attack the Prime Minister at his rally, even announcing bounties for anyone who succeeded in throwing a shoe at Modi. ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ੂ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. Listen now as the Firozpur policeman discloses how the Khalistani angle had been blaring a full 24 hours before the Prime Minister's arrival. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਉੱਥੋਂ 12:51 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਏ 52 ਮਿੰਟ ਤੇ 12:52 ਮਿੰਟ 52 पे आ गए. आपको एग्जैक्ट एक टाइम याद है? 1:10 मिनट ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹ. The testimony could be crucial for the inquiry ahead. ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਊਗਾ $1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ. अच्छा ये इनपुट था कि जो पीएम को जूता दिखाएगा उसको. ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ. What India Today's special investigation team has been shown is that the Punjab DGP's office evidently refused to or failed to act despite solid, specific, actionable advance intelligence. The question is, why? To dig deeper, our undercover reporters now meet Station House Officer Birbal Singh at the Kulghadi police station in Firozpur, the frontline officer in charge of the area where the breach took place. At first, Birbal Singh makes a claim, insisting that intelligence did not filter down to the lower levels of the police, where action could have been taken. ये इंटेलिजेंस भी तो आई होगी कि इस तरीके से. यार मैं बता तो रहा हूँ ये सब कम्युनिकेशन गैप हो गया एकदम ही हो गया जो हो गया कि लाइक आपके पैरेलल में एक इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती है आपके साथ ही मतलब पैरेलल में होती है तो उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि ऐसा कोई गैदरिंग हो जाएगा इस तरह से कुछ हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे नोटिस में नहीं है. India Today's undercover reporters press further. वो क्राउड तो यार ये है ना भाई एकदम मतलब लोगों में रोष है बैठ गए उनकी जगह उनकी है उन्होंने अपनी बात उठा ली मैं क्या करूं उनका राइट है. अब हमारे को सरकार ने ये नहीं कहती कि पट्टे मारो या डंडे मारो हमारे को हुक्म नहीं है. Birbal Singh's next words are crucial and comprise the first words on election sensitivities. हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो आंसू गैस छोड़ो गोलियां मारो वो तो है नहीं वो अडामेंट थे वो बैठ गए क्या करते ये बात. Listen to Birbal Singh again declared that there were zero orders to act against the protesters, something that could have been easily done had there been a clear mandate. हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो आंसू गैस छोड़ो गोलियां मारो वो तो है नहीं वो अडामेंट थे वो बैठ गए क्या करते ये बात. The stage appeared set for the chaos that followed. The SPG had communicated clearly that the Prime Minister's route needed to be 100% clear under all circumstances.
But orders from the top levels of the Punjab government allegedly were that the protesters were not to be acted against. If there had been clear orders, could the situation have been avoided? Listen to Birbal Singh make his predicament clear. अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से हम लोग नहीं ले रहे। इलेक्शंस है ना, इलेक्शन में किसी को मार पीट नहीं कर सकता। Either directly or by lack of specific orders, the police was basically primed not to act against the protesters, despite being fully aware that radical elements were part of the protests. Listen to Birbal Singh make his most startling claim yet. सभी को पता है कि मुखालफत हो रही है किसानों की तरफ से, नेचुरल से उन्होंने आ गए बात कर ली। अच्छा, मैं तो बड़ा लिखा बंदा हूँ, किसान की कुछ नहीं है, ये रेडिकल्स हैं थोड़े, नाम किसान का लगा लिया उन्होंने। अच्छा है रेडिकल्स। क्या पता कौन था ये, कुछ किसी के माथे पे थोड़ा लिखा ये किसान है, बस किसान के नाम पे कोई भी कटा उनका चल रहा है बस। Meeting just two police officials